Hello everyone, I am Myra Kakade and I am from grade 10th and from BPIS. I will be your podcaster for today. This is our second podcast. So many tons of waste is produced every day, different kinds but all harmful. Plastic is the most harmful. Well, to tackle the same issue, we have with us today Ms.Asmita Gokhale, the chairperson of Athak Foundation. Welcome, ma'am. Thank you for joining us. And today we will be talking about plastic waste management. Thank you so much, BPIS School, and to you also for calling us here to know everything about Athak Foundation. Thank you so much. Well, without any further ado, I'll jump right into the first question. Now, I have seen many people start organizations or foundations similar to yours, but then after a while, the motivation will wear off and they'll give it up. That is not what happened with you clearly. Can you tell us about what your inspiration was and what was the turning point that made you actually start your organization? Oh wow, that's great. See, जो भी हम लोग काम करते हैं ना, वो काम अगर दिल से करना है और अपने इन्वायरमेंट के लिए करना है, तो जो हाथ में लो वो कंप्लीट करो. दैट इज व्हाट वी थिंक. Okay, and right now when we are entering in Mumbai, there are two entry points. Yes. To enter Mumbai. One is a gateway of India, which is a really nice view. Another is Mulund. From Thane area, when we enter in Mulund, we are having a very bad smell and a very bad thing. What happens? There is a big dumping ground, and that smell always disturbs us. So one way it is real good and one way it is real worst. Someone has to work on it. Why it is so bad smell over there? Because the entire kachra of Mumbai comes here and we are having a dumping ground, right? Almost it is a mountain now. Someone has to work. See, once you give your kachra out to the municipal people who are collecting it, it's not over. We need to do something for that. We have to see whether it is discarded properly or not. Just to dump one another and others, it's not a problem. We need a proper and sustainable solution. So the thing which always gives us a problem for our health, our environment, our plants, everything, someone has to work. So that's the point where we say, yes, if we really want to do some work and give some good to the next generation, it is the thing to work for the plastic, thermocol, or the things which takes much time for the decomposition. So that's the way we have started. That's very true. Can you walk us through how the process works during your drives? Yeah, during drives. Mhm. Okay, we have our drive on last Sunday of every month. We have made everyone means habit. Ki everyone has to keep all the plastic and thermocol use for the entire month. They have to keep it at their respective homes only. Why we are doing that? Once we do that for the entire month, you come to know how much plastic is collected, how much plastic we are using for the month, and then we can think a single house when use huge amount of plastic, then think about the entire area from where the plastic comes. So we had been to many places, we had been to many societies, many schools, had been to your school also. Yes. Yes, so that way we are approaching everyone, we are telling them what is the bad thing about plastic, what are the things we have to do, and how we can clean our environment, so that the next generation, again and again I am repeating this, the next generation must get good things. And if this the environment is not good, whatever you have, the money, property, then your in ornaments and everything, it is the best if you are not fit. And that's why we have to look into it and we have to work. But that work ki almost 200 plus societies are with us, and more than 10,000, 12,000 students are with us. So the way it is going. तुम्ही आता जस्ट बोललात की तुम्ही शाळेत जातात आणि तुम्ही आमच्या पण शाळेत आलेलात वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे 5 जूनला Right. आणि तुम्ही आता जस्ट एक्सप्लेन केलं तसंच तेव्हा पण केलेलं आणि आमच्यापर्यंत पोचलंही होतं. But I think comparatively, maybe younger generation, it's easier to reach us and make us understand how it is. How do you do that with the parents or grandparents? How do you make sure that they also understand? It's a good question because I always believe to the smaller kids. Whenever I'm going to the school or any society, I get a good response from the small kids.
especially from the standard from first to fourth or fifth, sixth. They really understand what we want to say. They really listen very carefully, attentively. And once they understand what is bad about it, means while using the plastic, what is bad if we use it, and if they are convinced, they are there to convince their parents or grandparents also. अगर छोटे बच्चे हमारे यहाँ पे आके जिद कर रहे हैं कि नहीं हमको करना ही है, तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो पहले सुनते हैं क्या है क्या नहीं है, एंड देन द एक्टिविटी स्टार्ट्स. दैट्स द बेस्ट पार्ट. We wanted to do that. And as you grow up, you have multiple attractions beside you. So not necessary everyone will listen to you. So there is a problem when you cross 7th standard. It's very difficult for us to convince them. But below that, they are very sweet and they help us very well. But if not, we talk to parents. We tell them ki what is the loss when you are using the plastic. And when it comes to the health of human being, animals को होता है, birds को होता है, इनको होता है, उनको होता है, makes no difference. But when it comes to us, when we say it's the thing which is the main cause for the cancer or the asthma or the newborn baby is having a plastic, such thing which is really related to our health, human health, then makes a problem. We can't tell this thing to students, but we can tell these things to parents. And then the activity from the house itself, it starts. I have seen many interviews myself, and in those, people have found even the tiniest bit of plastic in drains or pipes. Any such unusual or surprising things that you have also found during your drives? Yes. See what happens, we have a habit of eating anything, means for example chocolates. It's a small paper. Yeah. What we do, we eat the chocolate and we left everything as it is. Maybe the dustbin is there, but we have a veins also. They do their job, and that plastic goes to the nali, the gutter. And when in rainy season especially, it clogs the entire, blocks the way from where the entire water goes to the sea, right? What happens, that's why 26th July, you might not be knowing, or I don't know whether you know it or not, in Mumbai it was a flooded situation. Why? Because plastic blocked all the pipes and gutters. Okay, what happens, the manholes were open. Unfortunately, a neurologist lost his life because he fall down in that manhole, and no one come to know he had drowned there. Yeah. Okay, so these thing happens. See, in addition to this, I can say whenever you are throwing something which you don't want, you means a human don't want a food, and we tie it in plastic bag and throw it to the dustbin which is there on the road. What happens, animals, stray animals, calves, they eat it because they can smell very well. But as you know ki plastic is not edible, you are eating whatever stuff is there inside. These animals don't know, they eat it, and it remains there in their stomach for many years. Maybe last 5 or 6 years before, there was a portrait who got first prize of photography. And what was that picture? The picture was a calf tied, and it was dissected photo of that calf, because doctor could not know ki baba what is the basic reason of that death. And it was very surprising, but the entire intestinal tract was full with the plastic. So the plastic takes the life of that calf. And who throw that plastic to here and there? We human. So we are indirectly cause of their death. So these thing happens, which should be avoided. वेल, असे इव्हेंट्स माझ्या पण सोसायटीमध्ये होतात, प्लास्टिक कॅम्पेन्स आणि असं सगळं. पण मी नोटीस केलं आहे की सगळ्यांना भाग नसता घ्यायचा, बिकॉज अशी मेंटॅलिटी पण असते की मी एकच माणूस करून कितीच फरक पडणार आहे, आणि असं बोलून मग मोस्ट ऑफ द पीपल नाहीच भाग घेत. तुम्ही कसं एन्श्योर करतात की भरपूर लोक येऊन पार्टिसिपेट करतात? थेंबे थेंबे तळे साचे, है ना, बूंद बूंद से सागर इज द सेम. कोणाला तरी पहिल्यांदा सुरुवात करायला हवी.
इवन वेन वी स्टार्टेड, आमच्याकडे एक छोटा टेम्पो होता. आत्ताचा कंटेनर आहे 20 फुटाचा. तो छोटा टेम्पो होता. त्या टेम्पोमध्ये आमच्यासारखेच ज्याला माहिती होतं की प्लास्टिक वाईट आहे, असे 5-10 लोक यायचे. मग 10चे 25, 30, 200, आज एवढी लोक झालेली आहेत. सो सुरुवात करताना कुणीतरी सुरुवात करायला पाहिजे, कुणीतरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला पाहिजे आणि कुणीतरी सपोर्ट करायला पाहिजे. सो या सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात तेव्हा आमच्यासारख्या आता आमच्या ड्राईव्ह झाल्या त्याच्या इथपर्यंत आपण पुढे जातो. त्यामुळे होतात. जस्ट बिलीव्ह दॅट. With a foundation like yours, a pretty big one and successful now at that, you must have surely come across some challenges. Can you tell us some of those which you have been facing throughout the years? Challenges, so many. From where to start? Till now also, after so many drives, we are facing challenges only. Firstly, when we start, initially very few people believed us. Rest said, oh my god, this is an activity, this is a show shine, so it will be closed within 3 or 4 drives, और एक साल करेंगे बाद में छोड़ देंगे, ये तो होने से रहा है, प्लास्टिक का कुछ नहीं हो सकता है, थर्माकोल का अभी तक तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला है, तो ये सब कर रहे हैं ना, ये सब दिखावा है. सो जो लोग 4 लोग अगर हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं तो 10 लोग वहां पे थे, वो बोल रहे थे ये सब बकवास है. मेनी पीपल सेड कि अरे अस्मिता तो ये यहाँ पे कलेक्ट करती है और जैसे बाहर के रिसाइकलर्स है तो वहां पे जाके वो बेचती है एंड शी इज मंटिंग मनी. दैट वाज आल्सो देयर. सो ठीक है, लोग तो क्या, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार. सो वो तो होता ही है. व्हेन यू बिलीव योरसेल्फ and do the work, and if you want to achieve something, whoever whatever says, you have to just ignore and focus on your goal, what you are doing and how you are doing. और अभी उसके बाद में जब भी हम लोग आगे चलते रहे, then public come to know, no, this is not activity which stopped after a year or so they join, और बस कारवा बनता गया. ऐसे ही सब लोग आते गए. That's the way. Well, now you just told us about your challenges. I'm sure you definitely have a success story where you've seen that your work has really made an impact and it made you feel better. Yes. Can you tell us such a success story? My God, we are so fortunate कि we had been recognized by many sanस्थाs. The first संस्था was बकुळाबाई देवकुळे पुरस्कार we got from the National Mahila Secretary. That was the first award. When we were not famous, I can say, उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया और उन्होंने हमें पहला पुरस्कार दिया. Thereafter टी पुरस्कार इज देयर. थाने गौरव में से पुरस्कार मिला. एंड yesterday we got सार्थक सेवा सम्मान पुरस्कार. So we were chosen among 50 to 60 NGOs working all over Maharashtra. So that way, national, state wise, local, many sanstha you can say, many societies you can say, they honored us. But always whenever we are receiving award, we say okay, we, yes, with due respect, आप पुरस्कार तो हमें दे रहे हो लेकिन वो पुरस्कार से भी हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है जगह और वो मशीन लाना. सो हर एक व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है उससे आप कन्विंस करो कि आपने जिसको पुरस्कार दिया है उनका काम आगे लेके जाने के लिए आपके घर में जो प्लास्टिक और थर्माकोल डंपिंग पे जाता है वो हमें लास्ट संडे लाके दो. That success means every member who gave us the puraskar when joins us, that is the much more greater puraskar for us, and we are working towards that. Congratulations on the award, ma'am. आता आपण डे टू डे लाईफ मध्ये भरपूर प्लास्टिक वापरतो, बॅग्स असो, टिफिन असो, काही असो, आणि बरेचदा जाणवत पण नाही आपल्याला. Any steps that you would suggest an individual to take so that they can have a plastic free healthy life? Means you want me to tell you ki what are the things which we are collecting like that or what? No, something that an individual can do just so that they don't use that much of plastic. See, basically plastic is not bad. First thing, plastic is created for our help only. Earlier what we were using? Glass. Yeah. Soil. Yeah. Means matka. Oh. Right?
क्या होता था कि ये जो चीजें है ट्रांसपोर्ट में ये टूट गई फूट गई तो जो भी अंदर मटेरियल है वो वेस्ट गया. सो वी नीड टू हैव समथिंग विच इज ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली ऑल्सो. उसमें अंदर जो भी चीजें भर रहे हैं वो उतनी ही अच्छी रहे वो भी देखना जरूरी है. ड्यूरेबल ऑल्सो. तो उसके लिए हमारी क्या कहते हैं हेल्प के लिए द प्लास्टिक वॉज क्रिएटेड. बट वी हैव यूज्ड इट एक्सेसिवली. मिसयूज्ड इट. वो जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसको यूज करना है बट वी मेक श्योर कि दैट शुड नॉट बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और सेंड इट टू द डंपिंग. दैट इज मेन थिंग. रिसाइकल करके क्या करेंगे हम लोग. एक बार मेरे हाथ में प्लास्टिक है वो मैंने अरे बाप रे मेरे यहाँ पे रिसाइकल वाला आता है उससे वो रिसाइकल्ड कुछ तो बनाता है. सो आई सेड ओके फाइन मेरे घर का कचरा गया बट दैट रिसाइकल्ड वॉट एवर मटेरियल कम्स टू यू यू इवन डोंट नो. अभी कभी कभी हम लोग जो माइक्रोवेव के जो बर्तन देखते हैं वो माइक्रोवेव में डालो अंदर होल्स गिर जाते हैं. नाउ टेल मी हाउ इट हैपेंस कि हम लोगों ने तो नया लेके आए हैं वो तो ऐसा ही नहीं था. तो वो होल्स कहां से आए. इट मीन्स व्हेन इट हैव अ हीटिंग पॉइंट तभी प्लास्टिक मेल्ट होके वो खाने के साथ में अपने ही बॉडी में जा रहा है. सो इज दैट रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज गुड what we are using if we are using for the food? No, it is not. अभी रिसाइकल्ड प्लास्टिक से मैंने सुना है कि बैग्स बनते हैं, कुछ टॉयज बनते हैं, शूज बनते हैं. ओके फाइन इट्स गुड बट व्हेन इट ब्रेक्स वेयर इट गोज. जो टूटा फूटा है वी आर नॉट यूजिंग इट, वी आर नॉट कलेक्टिंग इट, वी आर नॉट गिविंग टू द रिसाइकलर अगेन. अ टाइम कम्स कि व्हेन यू हैव टू थ्रो इट ओनली so it goes to the dumping. So is it a sustainable solution when you are recycling? No. When you are reusing, पानी के भी बॉटल के ऊपर लिखा हुआ रहता है one time use only. How many times we are seeing that? सिंपल चीज है वो पानी की बॉटल आप ज्यादा से ज्यादा टाइम यूज करो तो अंदर का ट्रांसपेरेंट लेयर है वो ब्लर हो जाता है. So you are using only water. So how it becomes blur? Means that plastic layer is mixed with the पानी. थिंक ओवर इट. ये सोचने वाली बात है, ये समझ के चलने वाली बात है. तो ये जो रिसाइकल रीयूज जो है या डंपिंग जो है वो स्टॉप करके जो भी प्लास्टिक आता है उसको डिस्कार्ड करना प्रॉपर वे विदाउट पोल्यूशन is a achievement, is need of the today's era. That is what Athak is doing. Very true. Now, since you have an organization, you must already have some goals for it. Yes. Where do you see yourself and Athak Foundation in the upcoming years? Athak Foundation, see the name itself says Athak means बिना थके. Yeah. So कचरा will be there forever. It's not कि बाबा आज तक जितना कचरा जमा हुआ है वो खत्म हो गया means my work is stopped. Is it so? No. No. It will be there. It will be created till we are there. Humans are there, right? So बिना थके till the end काम करना वो है. Secondly, ये जो एक एक जगह पे डंपिंग्स जो दिख रहे हैं ना इंस्टेड स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स बना के अभी वी हैव अ वार्ड्स वो सिस्टम है कि वहां पे वो काम करने के लिए. तो हर वार्ड में अगर वो मशीन बनता है वो हमारा कचरा उसी एरिया में डिस्कार्ड होता है, वो यहां से वहां जाता ही नहीं है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. व्हाट हैपेंस व्हेन दैट कचरा इज कैरिड आउट फ्रॉम दैट एरिया टू वन एरिया. ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल है, उसके लिए या तो डीजल है या पेट्रोल है. सो व्हेन इट इज बर्निंग इट क्रिएट्स द पोल्यूशन. सो वो पोल्यूशन आपका कम हो जाएगा व्हेन योर ट्रांसपोर्ट का वो जो चैनल है या जो रोड है वो डिस्टेंस ही कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. उसके बाद में एक जगह कचरे का माउंटेन करने से अच्छा है छोटे छोटे पॉकेट्स में ही वो खत्म करो. तो डंपिंग ही नहीं चाहिए. सो डंपिंग लेस इंडिया इज अवर टारगेट. वही डंपिंग का ग्राउंड इतने सारे एकर्स है उसके लिए आपके जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरीज हो, खेलने का ग्राउंड हो, ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए खिलाड़ी तैयार हो, वो उसके लिए जो प्रोविजन चाहिए ना वी कैन यूज फॉर दैट. दैट इज द मिशन. जीरो गार्बेज सिटी इज अवर विजन एंड फ्रॉम विद दैट विजन वी आर गोइंग.
आता बेस्ट फॉर लास्ट जसं म्हणतात, आय एम शुअर व्ह्युअर्स आर ऑल्सो क्युरियस टू नो, आफ्टर यू कलेक्ट ऑल द वेस्ट अँड इट्स अ हेफ्टी अमाऊंट, आय एम शुअर, वेअर डज इट गो अँड व्हॉट हॅपन्स टू इट? हो, आमच्याकडे एका प्लास्टिकच्या कलेक्शनला एका तासामध्ये 2 टन प्लास्टिक जमा होतं, बापरे. फक्त एका तासात. आणि हे सगळं पब्लिक घरी साठवतं ते होतं. येट आय एम नॉट हॅपी, इवन नॉट 50% पीपल इज गिव्हिंग प्लास्टिक टू अस. राईट नाऊ वी आर कलेक्टिंग प्लास्टिक अँड थर्माकोल. We are sending from here to Pune. Pune, we have a machine where with plastic and thermocol, every type of a dry waste is collected. Dry waste means उसमें napkins, sanitary napkins आते हैं, डायपर्स आते हैं, मेडिसिनल्स जो भी है वो भी आते हैं, मेडिसिनल हैजार्डस थिंग्स भी हम लोग लेते हैं, that is also there. Cardboards are there, carbon boards are there. Name the thing which is called as dry waste. It is calculated. We are collecting that. We are putting in a machine. And what that machine does, in 1200 degrees centigrade, it is burned up. Wow. Why I am saying 1200 degrees centigrade? 750 degree is the incineration where hazardous gas can come out. Our process, the gasification process, starts after that. It is a second step. Inside the drum, nothing comes out. It reaches, the temperature reaches to the 1200 degrees centigrade, and where everything is burned. But while burning, what happens? Whatever the gases, if you say methane, NH4, so nitrogen and hydrogen, both the molecules are separated in the air with a separate things. So no flame, nothing is there inside. You can see ki which is coming out No of that drum. also. तो gas ही नहीं है. No hazardous gas are coming. So where the question for the pollution comes? So no pollution. What happens then? That heat, 1200 degree heat, is a very big heat. Yes. Okay. So what 1200 degrees centigrade पे wet waste. Earlier we had everything of a dry waste. That wet waste, it is also dried up to 70%. And we create the pellets. What those pellets are? It is a substitute for coal. कोल कैसे बनाया जाता है? प्लांट्स को बर्न हुआ, उसको तोड़ा, बर्न किया और उससे में से कोल बनाया. अपने ही वेट वेस्ट से अगर हम लोग वो कोल को सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, वी आर सेविंग ट्रीज. नाउ यू विल से कि ये वेट वेस्ट से अगर हम लोग ये कंपोस्टिंग भी बनाते हैं, राइट? तो वो बनाते हैं तो आप ये जला क्यों लेते हो या ड्राई करके पैलेट क्यों बनाते हो? सी हम लोग जो मुंबई में रहते हैं ना, मुंबई का वेट वेस्ट जो भी कंपोस्टिंग भी होगा ना, तो भी वो लगता कि इसको है फार्मर्स को. बराबर है. मुंबई में फार्मर्स है नहीं है. मुंबई में ज्यादा नहीं, मुंबई के बाहर एरिया में तो ट्रांसपोर्टेशन, दैट कॉस्ट इज वेरी हाई. So which is not feasible, financially not accepted. So जो भी हम लोगों को कचरा हमारे और इतना आता है, वो सब होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए टेक्स 45 days. तो रोज का तो मेरा कचरा आ रहा है, तो 45 days वन ऑन वन ये डंप होने से ये सोल्यूशन होगा? नहीं होगा. मेरा आज का कचरा आज खत्म. जो कंपनीज कोल यूज करती है, वो कंपनीज अभी ड्राई वेस्ट से किया हुआ जो हमारा चार है, ग्रीन चार बोलो या पलेट्स बोलो, वो यूज कर रहे हैं. सो वेट वेस्ट गया, ड्राई वेस्ट गया, कांच कंपनी में गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी उसमें से मेटल निकाल के प्लास्टिक में हमारे में गया. सो नथिंग रिमेन्स. सो व्हाई वी नीड द डंपिंग ग्राउंड? वी हैव रीच्ड zero garbage. That's the target. So that is what we are doing in Pune. We want to do it here. So we are waiting and trying for that. You should get the machine here. It will be really useful. We have approached government. They should give us the place so that we can go ahead. And we hope जल्दी से जल्दी वो जगह मिल जाए और अपना मशीन मुंबई में आके मुंबई ये zero garbage पहुंच जाए. लॉंग टर्म इफेक्ट पण होईल ती मशीन ऍक्च्युअली इकडे आणून ठेवली तर. इट क्रिएट्स ना ऍक्च्युअली त्याने ते सगळं करायला तुम्हाला रोजगार लागणार, माणसं लागणार.
माणसं ते त्याच्यात मशीनमध्ये त्या पट्ट्यावर टाकणार, हे हम्म. करणार, जे तयार होणारा चार आहे तो बाजूला लागणार, बरं जी जागा आहे तिथे कुठेतरी सिक्युरिटी लागणार, सगळं मॉनिटर करायला एक माणूस त्याच्यावर सुपरवाइज लागणार. सो एका मशीनच्या मागे एवढी सगळी माणसं लागणार. सो रोजगार निर्मिती पण होते ना. हो. हे जे रॅकपिकर्स आहेत, ज्यांना पैसे काही मिळाले नाही मिळाले, त्यांना आम्ही रोजगार देतोय हो. लोकांना, आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी लागल्यानंतर जेवढी मशीन्स लागणार तेवढे जॉब क्रिएट होणार. So which is a good job opportunity Yes. also. It is a good business opportunity also. The way you take it. But we just wanted to keep one machine to show this is the way. Please follow. Well, thank you so much, ma'am, for giving us your time and coming here today, sharing your very useful knowledge with us. I'm sure the viewers also resonated and understood everything that you have said. Well, thank you so much again, and all the very best for your future endeavors. And I hope to see you in many more workshops and events in the future. येस शुअर. मी पण सगळ्यांना मुद्दाम तुम्हाला सगळ्यांना हे सांगेल, प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन आम्ही हे सांगतो. मुलं जर तुम्हाला सांगत असतील, स्पेशली फॉर द कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, थर्माकोल अँड ऑल, प्लीज हेल्प देम. कारण तुम्ही तुमच्या घरात, तुमच्याकडे जमिनी असतील, तुमच्याकडे दागिने असतील, तुमच्याकडे पैसे असतील, हे सगळं केव्हा असेल? जेव्हा तुमच्या मुलांची हेल्थ चांगली असेल. हेल्थ चांगली असेल तर त्याचा ते वापर करू शकतील, उपभोग घेऊ शकतील. ते नसेल तर तुमच्याकडे असलेली किंमत शून्य आहे. आणि त्यामुळे जर मुलं तुमच्यापर्यंत आली की आई प्लास्टिक कचऱ्यात टाकू नकोस, आम्हाला अथक फाउंडेशनला द्यायचंय, तर मी सगळ्या पेरेंट्सना, ग्रँड पेरेंट्सना रिक्वेस्ट करीन, मुलांचं ऐका आणि आपला भारत फक्त भारतासाठी नाही, स्वतःपासून सुरुवात करून इतर सगळ्यांसाठी पर्यावरण सुंदर, स्वच्छ, हरित आणि पोल्युशन फ्री करायला आपल्या मुलांना घडवा, आम्हाला मदत करा. धन्यवाद. Thank you, ma'am. थँक्यू.